Hi everybody, it's chemistry SLO based paper, and that one is a model paper. Okay, so here we are doing subjective portion. The first question here is 10 marks for one question, and there are multiple parts of that question. So here we go. What is vapor pressure of a liquid? How does vapor pressure vary with temperature at constant pressure? Show by a graph. So first thing is the definition part. So पहले हम question को handle करते हैं. So we part by part हमने इसकी definition भी देनी है. We need to reason it and then we need to show the graph. So that is the sections. So here we go. First of all, vapor pressure. Vapor pressure means the pressure generated by the vapors. और vapors कैसे बनते हैं? When your liquid, when the particles of the liquid get enough energy and separate from it. अब ये ओपन सिस्टम में नहीं हो सकता. आपका एक क्लोज सिस्टम है, आपने उसमें पानी रखा हुआ है. लेट्स सपोज दैट, और इसको आप इमेजिन करें कि आपने एक क्लोज सिस्टम लिया, आपने उसमें पानी रखा है, एंड ऑब्वियसली पानी हर टेम्परेचर, और आपका जो लिक्विड है वो हर टेम्परेचर पर इवेपोरेट होता है. सो द पार्टिकल्स विच गेन इनफ एनर्जी वो ऊपर की तरफ आएंगे, और जो ऊपर पार्टिकल्स हैं जो वेपर फॉर्म में हैं, दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दे कोलाइड विद द लिड एंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और जैसे ही उनकी एनर्जी ड्रेन होगी दे जस्ट गेट बैक इनटू द लिक्विड. तो आपके पार्टिकल्स लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड फेज के अंदर वापस जा रहे होते हैं. सो अगर जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, दैट पर्टिकुलर stage is that vapor pressure definition ना. So the vapor pressure of a liquid is the equilibrium pressure of a vapors above its liquid. तो ये इस तरह से ये equilibrium maintain होता है at any particular temperature, because of course we know when you increase the temperature what will happen. आप temperature increase करेंगे, आप system को energy दे रहे हैं, particles energy gain करेंगे. When they have more and more and more energy, obviously they just break that bonds, break the inter molecular forces and converted into gaseous phase. तो जैसे ही आप temperature increase करते हैं, आपका vapor pressure increase करता है. One more thing you have to take care of, that whenever you are studying these sort of things, तो आपने दो parameters को रिलेशन में लेना होता है, और जो बाकी पैरामीटर्स हैं यू हैव टू फिक्स्ड इट. सो हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं. नाउ एज वी सेड कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है विच इज मेंशन्ड हियर. सो व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ विल बी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट. सो टेम्परेचर आप अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं ना, किसी के कहने पर या यूं ही खुद से तो चेंज नहीं हो रहा. सो टेम्परेचर इज द इंडिपेंडेंट. सो यू विल टेक इट on x-axis and vapor pressure is your dependent parameter. Temperature के change करने से vapor pressure effect हो रहा है. So that is on y-axis and you will draw the graph and here you get the results. आप water लें, ethanol लें, diethyl ether लें, whatever the liquid you are taking, obviously the vapor pressure increases. Next question is systematic arrangement of element in table is called periodic table. So you have to describe its features. It's more like when you are describing the your house setup. There are 3 floors or 2 floors हैं मेरे घर में, और इतने rooms हैं और attached bath हैं, all that stuff. So in the same way you are describing the feature of periodic table. First of all हम आपके periodic table को divide करते हैं periods and groups. Groups में आपके पास A और B दो types के group हैं. A group में आपके पास 1 to 8 आपके पास ग्रुप में 8 ग्रुप्स हैं, एंड इन द ग्रुप वी हैव द एलिमेंट्स विच शो सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं, एंड वी नेम दैट विच अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. हमने इसको जर्नल नेम किया हुआ है. फॉर एग्जांपल 1A अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल गैसेस, हेलोजेंस. सो यू मेंशन इट. देन अगर हम पीरियड में मूव करें, पीरियोडिक टेबल हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है, एंड 7 हमारे पास पीरियड्स हैं. फर्स्ट पीरियड सबसे छोटा है, इट्स ओनली हाइड्रोजन. ऑन द अदर साइड वी हैव हीलियम इन 8th ग्रुप, एंड देन वी हैव सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड. सेकंड और थर्ड दोनों में 8 एलिमेंट्स आपके पास आते हैं. फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं. 6 में आपके पास जो है वो 32 एलिमेंट्स हैं, विच इज द लार्जेस्ट पीरियड. एंड देन जो आपका 7th है दैट इज इनकम्प्लीट. एंड वी ऑल्सो हैव वन ब्लॉक विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सेक्शन, जिसे हम लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स कहते हैं. हम ब्लॉक का जो इसको हम आप जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, और इसके अलावा आप इसको डिफाइन करने के लिए ये भी मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी ऑलरेडी नो दैट S, P, D एंड F subshells are available for filling. So all those elements which have outermost electron in the S shell
that is s block element. Then all of the elements which have p the electrons in p shell, incomplete or complete, that is p block element. For example, s block is 1 and 2 a group is your s block element. Your 3 से लेकर आपके जो 8 a group है, that is your p block element. Then we have internal b जो आपका section है, ये आपका d block element है. और जो आपके पास नीचे जो section हम separately mention करते हैं, that is your f block element, right? So we can do it, explain it in 3 ways. Next question is, properties of compound depend upon the nature of bond present in it. Illustrate the formation of ions in magnesium and chlorine by complete shell diagram. So as it said, you have to draw a complete diagram. सिर्फ external shell draw नहीं करना, आपने एक complete diagram draw करनी है. Or we have magnesium. So magnesium have 2 electrons in the outermost shell. First of all, you have to draw it, and then you can clearly see that we have 2 electrons in the outermost. और आपने उन 2 electrons को, because obviously it doesn't have a possibility for magnesium to attain 6 electrons, तो वो 6 ले तो नहीं सकता, 2 दे सकता है. So it loses 2 electrons. And obviously अगर उसने 2 दे दिए हैं तो 2 electrons कम हो गए, 2 minus charges कम हो गए, so it will be +2. And here we have the equation. Chlorine, we all know 7 electrons in the outermost shell, get 1 electron which is released by magnesium, converted into Cl minus, and you can show it here. अगर इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा ज़्यादा लिख देता है या पूछ लेता है, for example, write down the formula of that, what is the last formation of combination with magnesium and chlorine. So that is magnesium chloride with the formula MgCl2. Why? Because there are 2 electrons released by magnesium. One is picked by one chlorine and the second electron picked by the second chlorine, converted into chloride. So 2 chloride ions banenge, and which attach to magnesium by electrostatic force of attraction. So लेकिन mention चूँकि यहाँ ये question नहीं किया गया, so there is no need to tell. You have to read the question carefully. The answer must be accordingly. क्योंकि ज़्यादा चीज़ के कोई मार्क्स नहीं है. So you that is a good thing that you have a knowledge, but there is no need to present if the question is not asked like that. Then we have differentiate between compound and mixture. The very common question, mixture is a physical change, compound is a chemical change. Compound जब भी बनता है एक new pure substance बनता है, और mixture जो है वो that is an impure substance. For example, you are doing any sort of masala mixing. You are impuring each of the thing you have. मिक्सचर की कंपोजिशन आप पर डिपेंड करती है. इट्स अ वेरिएबल कंपोजिशन. आप किसी भी चीज़ को अपनी मर्जी और अपनी willingness के अकॉर्डिंगली मिक्स कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ कंपाउंड, द कंपोजिशन इज फिक्स, यू कांट चेंज इट. एंड इन अ कंपाउंड यू हैव अ सब्सटेंस व्हिच इज केमिकली कंबाइंड टुगेदर, बट इन अ मिक्सचर इट डजंट सो. And for example, you can quote an example of here: mixing of sand and water, mixing of different vegetables, mixing of any sort of fruit. It's really up to you, whatever you ratio maintained. And for as far as compound is concerned, you can quote any of the example. There are so many: calcium carbonate, water, carbon dioxide, whatever you like to write. Second question, a part is, or the third one: a student obtained following data in the experiment at 20 degrees centigrade, so that there is a fixed temperature. Prove Boyle's law by using given data. Now Boyle's law is the law to determine the behavior of gases, and that determines the relation between pressure and volume when the temperature is constant. So temperature पहले ही constant है. We have pressure and volume, और pressure और volume की different conditions हैं. For example, आपने जब pressure 0.350 atmosphere maintain किया तो आपका volume 0.707 centimeter cube था. When you raised your pressure to 0.551, आपका volume decrease होकर 0.450 centimeter cube होगा. तो apparently अगर आप इन सारी values को देखें, we have 1 2 3 4 5 6 set of values. So इन सब में जो एक system है वो बड़ा ठीक से चल रहा है. When you are increasing pressure, volume is decreasing. Now what you need to do, you have to prove that. So what we do, P1 V1 is equal to P2 V2. So आप इनको मल्टीप्लाई करें प्रेशर और वॉल्यूम वैल्यूज़ को, यू विल गेट द आंसर. और आप देखें कि आपके पास जो 6 सेट्स हैं उनके आंसर सेम होने चाहिए. दैट मीन्स दैट बॉयल्स लॉ इज डूइंग गुड विद इट. ओके, देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन हियर: डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स. सो सोल्यूशन दैट माइट बी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं. सस्पेंशन इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस. हेट्रो
हेट्रो मीन्स डिफरेंट, सो दैट मीन्स कि आपका जो मिक्सचर आ रहा है उसमें आपको 2 चीज़ें या 3 चीज़ें जो भी आपने डाली हैं वो अलग अलग से पता चल रही हैं. Homo means same, so that means whatever you are mixing, that is not, you can't just determine it by your naked eye. आप नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या है. And collides is also homogeneous mixture. Solution के अंदर particle size 1 नैनोमीटर से कम होता है. And suspensions के अंदर that's the size difference. So suspension में particle का size तकरीबन 100 नैनोमीटर से ज़्यादा जाता है और collides में ये 1 to 100 नैनोमीटर हो सकता है. सॉल्यूशंस आपके पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से नज़र नहीं भी आते और समटाइम्स होता है कि वो आ रहे हैं, बट सस्पेंशन में यू कैन क्लियरली सी द पार्टिकल्स विद नेकेड आई और कोलाइड्स में भी यू कांट सी देम बाय योर नेकेड आई. पार्टिकल सॉल्यूशंस के अंदर स्टेबल होते हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन, और अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो भी आपको कोई ख़ास चीज़ मिलती नहीं है, बट सस्पेंशन में सेटल हो जाते हैं आराम से. आप देख सकते हैं कि आपके बॉटम के अंदर क्या चीज़ मौजूद है. सो दैट इज़ सस्पेंशन. कोलाइड्स के अंदर अगेन कोई सेटल नहीं होता सोल्यूशन. आप सोल्यूशन को काफ़ी देर के लिए रख भी दें, यू कांट सी एनीथिंग इन द बॉटम. जो सोल्यूशंस, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं तो लाइट स्कैटरिंग नहीं करेंगे. सस्पेंशन के अंदर चूँकि पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो अगर बीम ऑफ लाइट पास करती है तो उसको स्कैटर करेंगे, ठीक है. और कोलाइड्स में डिपेंड करता है 1 to 100 नैनोमीटर इज़ अ रेंज, तो अगर पार्टिकल साइज़ ज़रा बड़ा आ रहा है तो वो लाइट स्कैटर करेगा. सोल्यूशन के अंदर चूँकि हमने अभी कहा लाइट द पार्टिकल इज़ नॉट दैट मच बिगर, सो अगर आप उसको फ़िल्टर करना चाहते हैं, फ़िल्ट्रेशन इज़ नॉट द टेक्निक टू सेपरेट द सोल्यूशन, बट येस फ़िल्ट्रेशन माइट बी द टेक्निक यू यूज्ड इन सस्पेंशन टू सेपरेट द solute. And collides again filtration successful नहीं होगी. The reason, for example, if you just assume you are using blood to filter, so blood में से आपको कुछ नहीं मिलेगा. Milk is also the example, but there might be the question arises in your mind कि उसके अंदर आपको जो we you know collides बन जाते हैं and we are used to have that malai type of a thing or cream type of a thing here. Yes, वो भी होते हैं उसके अंदर, but अगर आप उसको properly shake करें they mixed in it again, right? So और solution example में salt, water, sugar, water or any of the other liquid you are mixing in it, then it becomes, for example, you are mixing water and milk, then it's again a solution. And for suspension, chalk or sand or that type of thing with matter with your water, that is again a suspension. Okay, thank you.